बाहिर जोनाई आंचलिक समिति ने कई ज्वलंत समस्याओं के समाधान के मांग में मुख्यमंत्री को स्मारक पत्र प्रेषित किया। अखिल असम छात्र संघ की बाहिर जोनाई आंचलिक समिति के अध्यक्ष पलाश सैकिया, सचिव सुखेश्वर बरुवा और सलाहकार रंजीत बसुमतारी, मेदिनी दले के द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक स्मारक पत्र समिति के नेताओं ने आज अपने अंचल के कई ज्वलंत समस्याओं के समाधान के मांग में जोनाई सहजिला के सहायक आयुक्त सुनीत गोगोई के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री, जल संपदा मंत्री, शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री को स्मारक पत्र प्रेषित किया। स्मारक पत्र में उल्लेख अनुसार मालभोग गांव होते हुए केरकर गांव की ओर जाने वाले जल संसाधन विभाग के निर्मित बांध पर विशाल तालाब जैसे गड्ढों की वैज्ञानिक पद्धति से मरम्मत कराने, पोबा संरक्षित वनांचल से माझगांव तक जियो बैग लगाकर नदी के भुगताव को रोकने, सिले गांव पंचायत के अंतर्गत बेरा माझगांव और 2 नंबर बेरा माझगांव सरकारी प्राथमिक विद्यालय का गृह निर्माण करना, बाहिर जोनाई से 3 माइल घाट तक जाने वाली पथमार्ग का अतिशीघ्र निर्माण करना, बालाईपाम चारियाली से अकलेन मछुआ कैंप होते हुए बेरा छापारी की ओर जाने वाली मुख्य सड़क का निर्माण यथाशीघ्र किया जाए। पादी गांव होते हुए लुहिजान जाने वाली मुख्य सड़क का निर्माण यथाशीघ्र कराने की मांग किया गया है। बाहिर जोनाई आंचलिक समिति के अध्यक्ष पलाश सैकिया, सचिव सुखेश्वर बरुवा और सलाहकार रंजीत बसुमतारी, मेदिनी दले ने संवाददाताओं से कहा कि अगर सरकार हमारी समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र नहीं करती है तो आने वाले दिनों में छात्र संघ गणतांत्रिक आंदोलन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। আজি বাহিৰজিলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই জোনাই সমজিলা আয়ুক্তলৈ আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যই হৈছে যেহেতু আপোনালোকে জানে পবা বনা অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ মেজগাঁৱলৈকে যিটো স্পীডত গৰাখহনীয়া হৈ আছে এই প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে তৎকালীনভাৱে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আজি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। তাৰ লগতে মালভোগ আৰু কেৰকৰলৈকে যোৱা যিটো জলসম্পদ বিভাগৰ মাথাউৰি এই মাথাউৰি মাজে মাজে যিহেতু বৃহৎ বৃহৎ গাঁত আছে এই গাঁতসমূহ আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে জলসম্পদ বিভাগে নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত হোৱাত আমি আকৌ পুনৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আজি অসম চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক আজি আমি দাবী জনাই এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। তাৰ লগতে যেহেতু আপোনালোকে জানে শিক্ষামন্ত্ৰী আমাৰ এই ধেমাজি জিলাৰে হয়, তেখেত থকা সত্ত্বেও আমাৰ জোনাই সমজিলাৰ অন্তৰ্গত চিলে গাঁও পঞ্চায়তৰ বেয়া মাজগাঁও আৰু 2 নং বেয়া মাজগাঁও প্ৰাথমিক চৰকাৰী বিদ্যালয় অতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত হৈ থকাত আমি খুব দুখ প্ৰকাশ কৰি আজি চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক আজি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি অতি কম দিনৰ ভিতৰতে গৃহ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই এখন আজি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। যদি আমাৰ এই দাবীসমূহ ছাত্ৰ সন্থাৰ দাবীসমূহ আৰু ৰাইজৰ দাবীসমূহ যদি পূৰণ নকৰে তেতিয়া কিন্তু আমি ছাত্ৰ সন্থাই বাহিৰজিলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আৰু জোনাইবাসী ৰাইজ হৈ এখন গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম।